Namaste. Dear children, here I am back with my second lecture of the chapter India, Size and Location. In my previous video, I have explained you India, its location, India, its size, India and the world. In this video, we are going to study India's neighbors, do you know, which is in between the text, map skill in quite detail and exercise questions. हाँ बेटा, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आप पूरी तरह से ये वीडियो देखेंगे देन ओनली यू विल हैव अ वेरी क्लियर कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. With exercise questions and map skill, you will get a good revision of this chapter. One thing I have to remind you that अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि जब आप पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको सेकंड वीडियो समझ आएगा. उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. Let's begin our today's lecture from India's neighbors. India's neighbor to the northwest. Beta, I hope you know the directions. The four main directions are north, south, west and east. वेस्ट ईस्ट याद करने का तरीका पता है आपको क्या होता है? नॉर्थ साउथ तो कोई नहीं भूलता. वेस्ट ईस्ट याद करने का तरीका होता है वी. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वी? WE. वी. बस अपने मैप में जैसी बुक रखो यहां लिख दो WE. वी. तो W वेस्ट हो गया और E ईस्ट हो गया. ये सबसे इजी तरीका है वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन याद करने का. तो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. इधर तो हमारा कुछ है नहीं क्योंकि ये तो हमारे अपने ही एरियाज है, वाटर बॉडीज है. लेकिन नॉर्थ वेस्ट में वी हैव पाकिस्तान इन अवर नॉर्थ वेस्ट. यहां पर हमारी थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, तो अफगानिस्तान इज ऑल्सो अवर नेबरिंग कंट्री. यहां पर हमारी बाउंड्री कंप्लीट नेपाल के साथ, नेबरिंग कंट्री. उत्तराखंड और JNK का ये वाला पोर्शन हमारा चाइना के साथ लग रहा है. यहां से सिक्किम का बॉर्डर चाइना के साथ है, भूटान के साथ है. ये कंप्लीट चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ है. यहां पर हमारा म्यांमार है. अभी हमने यहां पर करके बोला, अब डायरेक्शन से बोलते हैं. नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नॉर्थ नेपाल, भूटान एंड चाइना, ईस्ट बांग्लादेश एंड म्यांमार. साउथ we have two island countries in our south, Sri Lanka and Maldives. जैसे लक्षद्वीप खत्म होते हैं थोड़े से आइलैंड, उसी के नीचे हमारे छोटे छोटे ये मालदीव्स आइलैंड है, वेरी क्लोज टू लक्षद्वीप. These are two our southern neighbors, island neighbors. I hope you came to know about the countries which are in Indian neighborhood. Okay. There are 5 countries which make Indian subcontinent. You know how many continents are there? There are 7 continents. Continents 7 में किस बेसिस पे अलग किया गया? वहां का क्लाइमेट, वहां की लिटरेचर, लैंग्वेज, वहां का ज्योग्राफिकल फीचर के हिसाब से हमने कॉन्टिनेंट्स डिसाइड किए. लेकिन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट केवल एक ही सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में है, उसके आगे भी इंडिया का ही नाम लगा है. तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट वी आर अ सब कॉन्टिनेंट. जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कंट्री आती हैं तो उसके नाम के आगे भी इंडिया ही लगा है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कंट्री क्या है? सेंटर में इंडिया, पाकिस्तान, इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, Nepal 3, Bhutan 4 and Bangladesh 5. These 5 countries together make one subcontinent. Remember, for
always for your knowledge, that what is subcontinent? A continent which is separated from the main continent by this Himalayas, and all the countries which are to the south of Himalayas were one entity in the earlier times. अब तो सब देश अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इन सब को हम एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? हमारा एक ही इतिहास है, एक ही हिस्ट्री है, लगभग एक ही तरीके की भाषा है, लगभग एक ही तरह का हमारा फूड हैबिट्स है, ड्रेस हैबिट्स है, फेस्टिविटीज है, एक ही तरीके की है। लेकिन अब वो डिवाइड हो गई, वो बात अलग है। लेकिन हम इन 5 कंट्रीज को मिलाकर हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ओके, सो नाउ लेट्स डू, first we will do map skill and then we will do you know, because I have already put map on the board. So let's do map skill given in your NCERT book, page number 9. Very simple. If you have understood the lesson nicely, you will be able to answer it very quickly. Okay, first question is, the island groups of India lying in Arabian Sea and Bay of Bengal. Island group lying in Arabian Sea is Lakshadweep Island. Island group lying in Bay of Bengal is Andaman and Nicobar Islands. Clear? The countries constituting Indian subcontinent. Just now I have told you the countries constituting subcontinent are India, Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh. 5 countries making Indian subcontinent. The states through which Tropic of Cancer passes: Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, Mizoram. 8 states. You can write 8 states and then you can mark. The northernmost latitude in degrees. Northernmost latitude is 37 degrees 6 minutes north. Southernmost latitude of Indian mainland. पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, पूरा क्वेश्चन। अगर आपने केवल पढ़ लिया southernmost latitude, फटाक से मार्क कर दिया। Southernmost latitude of Indian mainland, तो mainland ये है और southernmost latitude क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन, तो आंसर बन जाता 6 डिग्री 4-5 मिनट्स नॉर्थ, अंडमान एंड निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। आएगा ईस्ट ही, चाहे वेस्ट में भी लिखें। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, ये रहा 3 सीज, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल सी और नीचे इंडियन ओशियन इज कन्याकुमारी। द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, द स्ट्रेट इज पाक स्ट्रेट। I will write it spelling here. This is L remain silent, P-A-L-K, Pak Strait. Okay? Okay. Next question is the Union Territories of India. There are 8 Union Territories now. Number 1, Delhi, our National Union Territory. Number 2, Chandigarh. Number 3, Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli together. They are clubbed into one union territory. Recently, in this January month of this 2020 only, Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli are considered now one union territory. Number 4 is Lakshadweep. Number 5 is Andaman and Nicobar Island. 6th is Puducherry and 7th is Jammu Kashmir and 8th is Ladakh. This, now we have total 8 union territories. Now we have finished with our map skill. I hope you have understood the chapter and the map skill nicely. Now the one topic is left is do you know. There are some
blocks in the chapter where the information is written. Let's take do you know from the beginning all together. Number 1 on page number 1 of the chapter. The southernmost point of Indian Union is Indira Point. Union, see again the word came, Indian Union, and which got submerged under the sea water during tsunamis in 2004, which I have already told you that this is the southernmost point, Indira Point, which was submerged under the water, but we still consider that it is our southernmost point. Okay, page number 2, find out. Why 82 degree 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India. जो हमने करी थी ये लाइन को हमने क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया है? Because India is a country of 30 longitudes and 30 longitudes have their own local time. So to avoid the confusion and to bring uniformity of time within the country, this line which passes from UP Mirzapur district is taken as Indian Standard Meridian, and the time on this longitude is accepted as the time for entire country, which is called Indian Standard Time. Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? Duration of day and night. Duration means length of day and length of night. At Kanyakumari, they are almost of equal length. 12 hours day, 12 hours night. But as we move away from Kanyakumari towards Jammu and Kashmir, it is very clearly visible that days are smaller in winters and nights are longer. In winters, days are longer. In summers, nights are smaller. This difference, duration of day and night is very much felt as we go away from Kanyakumari. The reason behind? We are very close to equator. Here in Kanyakumari, we are very close to equator. Equator is 0 degree, we are at 8 degree. And that is why, because on the equator, the sun shines on the equator and the day and night are of equal length. Always, throughout the year. And that is why Kanyakumari is being close to the equator also have very less difference in the duration of day and night, and as we go away from the equator, this duration increases. Then there is one do you know that we have already discussed. Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. Okay. Now on page number 4, find out the number of union territories along the western and eastern coast. So we have just now done in map skill. In western coast we have one union territory, Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu. कोस्ट बोला है तो हम ये आइलैंड को नहीं लेंगे. वेस्टर्न कोस्ट में केवल दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली. ईस्टर्न कोस्ट में केवल एक पौंडचेरी और पुडुचेरी. एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट? गोवा. एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? राजस्थान. The state which do not have an international border or lie on the coast. मैप से उन स्टेट्स को ढूंढना है जिनके साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है और जिसके पास कोई कोस्ट लाइन भी नहीं है. चलिए, लेट्स सी विच आर दोज स्टेट्स विदाउट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड विदाउट एनी कोस्टल बाउंड्री. Okay, let's see the states without any international border and coast is 1 Madhya Pradesh, 2 Chhattisgarh, 3 Jharkhand, 4th Telangana and 5th Haryana. So these are 5 states in India which can be called as landlocked states without any international border and without any coastline. So we can see here these are the 5 states in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana and Telangana.
Okay. Now classify the states into 4 groups, each having common frontier with Pakistan. Pakistan, which states have border with the Pakistan? Gujarat, Rajasthan, Punjab, and this is not state now, Jammu and Kashmir. तो स्टेट पूछेंगे तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब. एंड वी कैन राइट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान. सेकेंड कंट्री इज चाइना. चाइना वी हैव कॉमन बॉर्डर अगेन यूनियन टेरिटरी लद्दाख. इसमें जे.एंड.के नहीं आएगा. लद्दाख. हिमाचल हैज कॉमन बाउंड्री. उत्तराखंड हैज कॉमन बाउंड्री. देन हियर सिक्किम हैज बाउंड्री. Arunachal Pradesh. So these are the states which have common borders with China. Beta, please be in habit of looking into atlas. This is the favorite pastime. It enhances your knowledge also and you enjoy also finding these countries. Next is Myanmar. ये हमारा म्यांमार कंट्री है. इसके साथ बॉर्डर लगते हैं हमारे, ये देखो येलो कलर का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम and Tripura have common border with Myanmar. Lastly, Bangladesh. बांग्लादेश यहाँ सेंटर में बैठा है. इसके वेस्ट में वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल ने ऊपर तक इसे रखा है. यहाँ से असम टच कर रहा है, यहाँ से मेघालय और ये त्रिपुरा. So these are the states which have common border with Bangladesh. Last, do you know? Before 1947, there were 2 types of states in India, the provinces and the princely states. Provinces were directly ruled by Britishers. They were under the Britishers, and princely states were ruled by local Indian rulers who have not accepted the autonomy of Britishers. जिन्होंने Britishers के रूल को नहीं माना था और they continued ruling their states, they were known as princely states, and provinces were the states which were ruled by Britishers. So with this last, do you know, I think we have covered each and every aspect of the chapter. You can very easily do exercise questions. Choose the right answer from the 4 alternatives. The Tropic of Cancer does not pass through. Does not pass through में कौन सी वाली लाइन आएगी हमारी? ये हम does not pass through Odisha. Easternmost longitude, very easy for you. 97 degree 25 minutes east. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontier with. देखो आप अपने आप ध्यान से, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, देन वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. किसके साथ, किस कंट्री के साथ कॉमन फ्रंटियर है? नेपाल. तो नेपाल इज द आंसर. ऑल दीज स्टेट्स हैव अ कॉमन बॉर्डर विद नेपाल. इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती, कभी कावारती घूमने का मन कर रहा है तो समर वेकेशन में, विच यूनियन टेरिटरी यू आर प्लानिंग टू गो देन? Kavarati is capital of Lakshadweep Island, very close to Kerala. You can go to Lakshadweep by waterways, enjoy the water route from Kerala to Lakshadweep. Kavarati is the capital of Lakshadweep. My friend hails from a country which does not share land boundary with India. कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम? 4 कंट्री दी हैं. भूटान की बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का है, रहा तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान इज द आंसर. Name the group of islands lying in Arabian Sea. Lakshadweep Islands. Name the countries which are larger than India. R, C, U, C, B, A. Okay. Which island group lies in the southeast? South or east? But Andaman and Nicobar Islands. Which island countries are our southern neighbor? Maldives and Sri Lanka. The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat, but watches show the same time due to the longitude which is taken as Indian Standard Meridian.
there is difference of 2 hours. But why watches show the same time? Because we do not accept the local time of 30 longitudes. We have taken one standard meridian, 82.5 degree east. The time on this longitude is accepted as the Indian Standard Time for the entire country. That is why we do not have any confusion of time within the country. The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Yes, it is of great significance from the past until today, because India is on the head of Indian Ocean, on the head of waterways. The countries to the west of India, to the east of India are all connected by waterways. To India, India has long-term ancient relationship with these countries through waterways. All our heavy, bulky raw material, imports and export, 95% of India's export is being done by these sea routes. So India has a very, very important long coastline which helps us to have very good relations with our countries which are quite far from us, quite close to us. So central location is always very important for India. So with this, we conclude our chapter. We have taken each and every aspect of the chapter. India's all size, location, India's terms with the world, neighbors, do you know, map skill, and one more thing we have covered, that is exercise questions. So with this, the chapter over. I hope you have understood the chapter, and thank you so much. I will be waiting for your comments. Thank you. Have a nice day.